So hello everyone and welcome to UPSC-RTS classes. Myself Shubham and आज जो हम बात करने वाले that is about the current affairs because we all know कि current affairs plays a very important part and a role in UPSC prelims and mains and overall UPSC preparation साथ ही साथ दूसरे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में भी बहुत ज़्यादा important role play करते हैं. So what we will be doing is that, see, if I will be talking about then for the current affairs, I would suggest you to read newspaper for sure. Firstly, that is Indian Express and Hindu. You can know उनको आप रेफर कर सकते हैं. साथ ही साथ you can go through magazines of different institutions are there, and also you have I would say गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिसोर्सेज है लाइक नो दे themselves एक इंडिया ईयर बुक आती है. यू कैन रेफर टू दैट फॉर एन ईयरली करंट अफेयर्स नो अपडेट्स एंड ऑल्सो द PIB योजना कुरुक्षेत्र. So the different kind of references resources are there. What I will be doing is that I will be separately mentioning, I would be separately making you study के हम मंथली स्टडी कर लेंगे छोटे छोटे सेक्शंस में सो दैट इट डजेंट पाइल अप, वो ज़्यादा नहीं हो जाए आप एज अ स्टडी मटेरियल. सो मेरा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि छोटे छोटे सेक्शंस में हम इसको कवर अप करें. सो फॉर टुडे आई वुड बी डूइंग इज़ दैट मैं जून 2026 जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस रही है उसको हम रेफ़र कर सकते हैं. आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल. सो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग फॉर यू ऑल एज अ करंट अफेयर पार्ट. ओके. ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, जैसा कि मैं कहता हूँ कि मेरी कोशिश है कि मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाऊँ, दोनों हिंदी और इंग्लिश में. एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़ दैट कि जो लोग भी एक्सपेंसिव कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, उन स्टूडेंट्स तक ये क्लासेस पहुँचे सो दैट वो इससे पढ़ सके और समझ सके. एंड दीज क्लासेस आर मोर फोकस्ड नो स्टडी अप्रोच. कोई मैं इधर उधर की कॉन्वर्जेशन नहीं करता हूँ. ओके, सो विल स्टार्ट नाउ. सो एज यू कैन सी इन द मैप दैट अब ये जो है सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ जून 2026 के प्लेसेस इन न्यूज़ विच आर इन इंटरनेशनल मींस वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं इस सेशन में. एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट वर्ड. आई वुड से लाइक लेक बाइकल हैज़ बीन इन द न्यूज़, then Shivlak volcano, then Wangchu hydroelectric project. Okay, then talking about the Giant's Causeway, then Norway, Strait of Messina, Venezuela, Bolivia, Volcan de Fuego, San Andreas Fault. So ये जो places है ये कुछ न्यूज़ में रहे हैं in the month of June 2026 I am talking about. Okay, and this I am talking about the international places in news, the world, in the world, the places which have been in the news for different reasons. तो basically you can see them in the map that कहाँ पर जो है क्या lie कर रहा है. Just to give you an idea that where is San Andreas Fault, where is Venezuela. Okay, Venezuela में seismic activities हुई है, there have been an earthquake. Okay, we'll be talking about Wangchu hydroelectric project. Then we will be talking about Lake Baikal. Okay, then the volcanoes, different volcanoes which have been in the news, and these all places which we will be talking about in the no in this session. It has been in the news in the month of June 2026, and that is for world international places. For July and August, we will be covering it in the different sessions and next classes, as well as the Indian those places which have been in the news, the national places. We will be discussing those places. I would say in the upcoming sessions. Okay, so those places also we will be covering up. But for now, we should be knowing about uh, these places and their location in the world map. Okay. Okay, so first of all, I will be talking about San Andreas Fall and about Sejong Pass. Okay, so as you can see in the map, okay, it is located around USA Southern California. Okay,
And why it has been in the news? Because of some recent studies, okay, that nearby San Andreas Fault and its adjoining areas, okay, that it has been in the news that there have been some tectonic stresses, okay, तो इस वजह से जो है सैन एंड्रियास फॉल्ट न्यूज़ में रहा है। टेक्टोनिक बाउंड्री की अगर हम बात करें, सो इट डायरेक्टली सिट्स बिटवीन द पैसिफिक जो प्लेट है एंड द नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है, उसके बीच में लाई करता है। ओके, सो next thing I would be talking about is the earthquake gate, that is the function and impact. Okay, so जो सेजोन पास है, you can say Quezon Pass or Sejon Pass, okay, as the earthquake gate because it can block a rupture from spreading between the San Andreas Fault and San Jacinto faults. Okay, and these two faults interact dynamically at this exact point. So that is what it is, an earthquake gate. ओके, सो बेसिकली जो टर्म्स हमें देखनी चाहिए इस लोकेशन में, दैट इज़ द सैन एंड्रियास फॉल्ट विच लाइज अराउंड द southern California in the USA, then the adjoining San Jacinto fault. Okay, so जो Quezon Pass है is an earthquake gate, okay, विच बेसिकली जो सैन एंड्रियास फॉल्ट है एंड सैन जैकिंटो फॉल्ट जो है वो इस पॉइंट पर इंटरेक्ट करते हैं। ओके, सैन जैकिंटो फॉल्ट जो है, ओके, इट इज़ अ जोन एंड इट इज़ अ मेजर राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ओके, जो सदर्न कैलिफोर्निया में आता है। ओके, एंड जो सैन एंड्रियास फॉल्ट की मैंने बात करी, इट इज़ द बाउंड्री बिटवीन द पैसिफिक प्लेट एंड द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ओके, so I hope it is a bit it's clear for you all that the term Quezon Pass, okay, the earthquake gate which it is known as, then San Jacinto Fault zone and the San Andreas Fault. So these all terms are related to very close enough. These all places or the terms, okay, in the uh, in the map nearby USA. Okay. So next place I would be talking about जो next news में रही है, that is Volcan de Fuego. Okay, so इसकी location जो है it's nearby Guatemala. Okay, it's around the Pacific Ring of Fire and जो it is a kind of active basaltic stratovolcano. Okay, और इसकी जो प्लेट बाउंड्री है दैट इज़ द कोकोस प्लेट एंड द कैरेबियन प्लेट, इंटरेक्शन जो है उन दोनों के बीच में है, कोकोस प्लेट एंड द कैरेबियन प्लेट। ओके, यू कैन सी इट इन द स्मॉल मैप जो मैंने प्रोवाइड किया नीचे, जोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट मैप। ओके, सो इन दैट यू कैन सी दैट वोल्केनो डी फ्यूगो इज देयर। उसके बाद वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट recently, that because it is one of Central America's most active volcanoes. Okay, and in 2018 it also erupted, and it is a very high volcanic activity region जो सेंट्रल अमेरिका के अराउंड में है, एंड इट इज़ एन ओपन वेंट वॉल्केनो, सो काफ़ी फ्रिक्वेंट और काफ़ी ज़्यादा एरप्शंस होते हैं वॉल्केनो के। सो दिस इज़ द प्लेस वी शुड नो अबाउट कि किन दो प्लेट्स के बीच में, दैट इज़ द कोकोस एंड द कैरेबियन, एंड द लोकेशन ऑफ वॉल्कैन डी फ्यूगो वॉल्केनो जो है, ओके, दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ basaltic stratovolcano, okay, nearby Guatemala, and it is around the Central American region, the Pacific Ring of Fire. Okay, so the next place is news in the news is the Shivlak volcano. Okay, and इसकी जो location है that is in around the Kamchatka Peninsula, Russia, which is the far east of Russia. You can see it in the smaller map which I have provided, जो मैंने image में दे रखा है। Okay, and it is a kind of active stratovolcano. So the जो last volcano हमने पढ़ा था that was Volcan de Fuego, which was nearby the Central American region around Pacific Ring of Fire. So ये जो volcano है, this is around the Kamchatka Peninsula, वो भी stratovolcano था, and this is also a stratovolcano. Okay, and it is one of the Kamchatka's most active volcanoes, and continuous eruptions हो रहे हैं been since 1999 till present. So you can see the diagram about the volcano, the pyroclastic flow, the ash plume,
Okay, what how volcano is represented. Okay, so that is how this place is in news. Another volcano, that is Shivlak volcano. Okay, so next I will be talking about the places around the continents, I would say, the countries, that is, एक तो हम बात करेंगे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की, एंड देन वन विल बी आई विल बी टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज़. सो एक जो कंट्री रही है, दैट इज़ द वेनेजुएला, दैट इज़ इन द साउथ अमेरिका. ओके, सो वेनेजुएला हैज़ बिन इन द न्यूज़ बिकॉज उसमें अभी रिसेंटली इन द जून 2026 कुछ पावरफुल सिस्मिक एक्टिविटी देखने को मिली है. सिस्मिक इवेंट्स अगर हुए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं. सो इसके बारे में हम कुछ देख सकते हैं. यू कैन सी इट इन द मैप. इट्स बॉर्डरिंग कंट्रीज, दैट इज़ कोलम्बिया इन द वेस्ट, ब्राज़ील इन द साउथ, गुयाना इन द ईस्ट. ओके, एंड इट्स कैपिटल इज़ कैराकस. यू शुड नो अबाउट इट. जो मेजर रिवर्स यहाँ से फ्लो होते हैं, दैट इज़ रियो नेग्रो एंड द ओरिनोको रिवर. Okay, its highest peak is Pico Bolivar, and one of the waterfall, which is a world's highest waterfall, that is the Angel Fall, or we can say the Andes Fall. So the Angel Falls, that is in the Venezuela. Okay, and you can also note it down that for the resources, it is world's largest oil reserve. ओके, वेनेजुएला में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं. अलॉन्ग विद दैट डिफरेंट रिसोर्सेज और है, लाइक कोल, आयरन, बॉक्साइट एंड गोल्ड. ओके, सो दैट इज़ वाई वेनेजुएला हैज़ बिन इन द न्यूज़. So the next place in news, it is Bolivia. Okay, you can see it in the map. It is also a South American country, and उसके जो bordering areas है, that is, you can see it is Brazil, Peru, Chile, Argentina, and Paraguay. So I've just mentioned a small for you all, a kind of a trick, BPCAP. You can just maybe change it. Okay, its capital है La Paz, basically, that is the executive capital. Okay, and also अभी कुछ recent change जो है अनाउंसमेंट हुए फ्रॉम द बोलिवियन प्रेसिडेंट, दैट वाज अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है लागू करी गई है बोलिविया में. So we should know about Bolivia that it is a landlocked nation in the South American continent, and as I told you, the bordering countries, and the Lake Titicaca. It is the highest lake. Okay, world's highest navigable lake. That is also located in Bolivia, which has been shared with Peru. Okay, and its highest peak is Nevado Sajama. The important thing is about the landlocked. It is a landlocked nation, the bordering areas. Okay, and the late Titicaca, and why it has been in the news. Okay, that it has a state of emergency has been announced in this country. Okay, so now another country which has been in the news is Norway. Okay, and Norway, you can see in the map also, it is a European nation. ओके, एंड बेसिकली अभी ये न्यूज़ में बिकॉज इसने बैन लगा दिया है AI टूल्स के ऊपर, स्पेशली इन द एलिमेंट्री स्कूल में एंड फॉर चिल्ड्रंस, ताकि उनके ऊपर जो है लर्निंग पर इफेक्ट ना हो. दे कैन हैव अ गुड लर्निंग विदाउट द यूसेज ऑफ AI टूल्स. The things we need to know is that its capital is Oslo. Okay, it is an Scandinavian peninsula country. It borders Sweden, Finland, and Russia. Okay, जिन seas से ये bounded है, that is the Norwegian Sea and North Sea in the west. Okay, and by the Barents Sea in the north. You can see in the smaller map provided at the top right corner. Then the topography की बात करें, the longest river is Glomma. Okay, so that is it about the Norway country, which why it has been in the news. So next I would be talking about some waterways or the places, some geological marvels which have been in the news. So Giant's Causeway. Okay, so Causeway is around the European area only, nearby the Ireland. Its location is around the Northern Ireland. ओके, एंड इसके इधर कुछ डिस्कवरी चल रही है. सो वी शुड बी नोइंग अबाउट इट्स लोकेशन. इट इज़ ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विच वी शुड नो. ओके,
देन इसमें जो है सिग्निफिकेंस इज लाइक it is a kind of columnar jointing, okay, as a structure wise. Okay, so that is what we should be knowing. इधर यहाँ पर investigation चल रही है from a geochronologist, okay, basically that the formation of Giant's Causeway. Okay, so that is about the news. Okay, so I hope it's clear that uh, it is a place which has been in the news nearby the Northern Ireland. Okay, so next place it is Strait of Messina. Okay, now Strait of Messina, you can see it in the map that it is basically separates the mainland of Sicily and Italy. Okay, and the recent context has been that no जापान के जो जापान and Italy ने जो है they are deciding to construct a very ambitious bridge, okay, across this Strait of Messina. So strait is a water body basically that joins two larger water bodies. So इस केस में जो ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है दैट इज द टायरेनियन सी, ओके, एंड द आयनियन सी. And strait also separates two land masses, so it separates the mainland Italy from the island place that is the Sicily. Okay, so that's why it has been in news, Strait of Messina, because an ambitious bridge needs to be developed or going to get constructed. Okay, next place which has been news, जो न्यूज़ में रहा है, that is the वांगचू hydroelectric project. Okay, that has been in the Asian region. Okay, and ये अराउंड भूटान कंस्ट्रक्ट हो रहा है. इट इज़ अ इंडियन भूटान जॉइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अराउंड. इट इज़ अंडर द 5000 मेगावाट. ओके, जो मेजर रिवर फ्लो हो रहा है ऑन दिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट दैट इज़ द वांगचू और द रायदाक. It is a tributary of the Brahmaputra river. So this is an important one, that on which river the Wangchu hydroelectric project is being constructed. So Wangchu could be the name, or it is also known as the Raidak river. Okay, and it is the location is around the Raidak river only, that is Chuka, Bhutan. Okay, so that is what we should be knowing, that this Wangchu hydroelectric project is a joint combined development between India and Bhutan. Okay, so basically it is a strategic bilateralism between the two countries. Okay, and it also develops a regional energy security. Okay, so that is what uh, we should be knowing about this project, the location and the countries involved जो इस project में है, that is India and the Bhutan. So the next place which has been in the news, जो next जगह है, that is the Lake Baikal, another Asian place. It is in the Siberian region, Russia. Okay, and what are the important thing is it is the largest freshwater lake by volume. Okay, it is the oldest and the deepest as well. Okay, it is a UNESCO World Heritage Site. So मैंने एक और UNESCO World Heritage Site आपको बताई थी आज ही. Okay, you should just revise that which was the previous World Heritage Site I mentioned today, जो मैंने आज आपको बताई थी during the previous slides. Okay, uh, I'll just tell you after this slide. Also, hydrological wise, लेक बाइकल जो है, इट इज़ द ओरिजिन जो रहा है इसका, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल रिफ्ट लेक. इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज आई टोल्ड यू. Okay, and yeah, that is what important part it is. Okay, so this has been in the news, Lake Baikal. Okay, it is around the Siberian Russian region, the oldest, deepest and the largest freshwater lake by volume. Okay, we should be also knowing जो bottom में मैंने mention किया, the Olkhon Island, the island around this river. Okay, and the Angara river, which is an outflow. You can see it in the diagram, the bottom right, and it is a single outflow, that is the Angara river, and the major inflow is the Selenga river in this Lake Baikal. Okay, so it is a UNESCO World Heritage Site. जो previous UNESCO World Heritage Site मैंने आपको बताई थी, that was Giant's Causeway.
okay, which was in the Northern Ireland area. So now these were all places in the news today. सो दिस वाज द इमेज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में शो करी थी. सो ये सारी प्लेसेस जो है न्यूज़ में है. जून 2026 की बात मैं कर रहा हूँ इन द वर्ल्ड. सो दीज ऑल प्लेसेस इन द वर्ल्ड वर इन द न्यूज़ फॉर सम और दी अदर रीजंस. ओके, सो हमें इन प्लेसेस के बारे में एक आइडिया रहना चाहिए दैट वाई दे हैव बीन इन द न्यूज़, इफ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड व्हाट आर द लोकेशन, उसकी लोकेशन क्या है, if it is a famous country or a place, what water bodies it is bordering. So bordering water bodies कौन सी है, bordering countries कौन सी है. Okay, and if it is a UNESCO World Heritage Site or not. Okay, so that's what we have discussed. I think we have discussed around 10 places in this session. ओके, सो दीज हैव बीन, सो ये सारी जगह जो मैंने वर्ल्ड प्लेसेस आपको बताई आज, दैट इज़ इन द न्यूज़ इन जून 2026. इन द अपकमिंग सेशंस आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोर करंट अफेयर्स पार्ट एज वेल, एंड दैट इज़ इन सेक्शन, सो दैट आपको पढ़ने में भी जो है एंड समझने में भी इट वोंट पाइल अप, इट विल बी मोर ईजियर. And my target would be to make you study, okay, effectively, okay, and not to burden up a lot of current affairs. Means no, एक साथ ही सारे current affairs आ जाएंगे, so it will be a difficult thing to learn all those current affairs. Okay, so thank you everyone for listening with so much patience, and all the best for all of you for your studies. एंड आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ चीज़ें. मैं एम ट्राइंग कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं आपको पढ़ा सकूँ. मे बी जो नोट्स प्रोवाइडेड है दैट इज़ इन इंग्लिश, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ करूँ, सो दैट आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी रहेगा. ओके, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू एवरीवन.